Good evening and welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Gaurang Dhawan Lal and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद गौरा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ जयंतो दास। जयंतो, स्टूडियो में आपका स्वागत है। शुक्रिया। और अब हेडलाइंस के साथ है गौरा धवन लाल। Thank you, Sonu. Punjab National Bank, ICICI Bank and HDFC raised lending rates by 5 to 30 basis points from today. At the stock markets, Sensex falls 185 points, Nifty loses 62 points, but the rupee appreciates 12 paise against the dollar, and Maruti Suzuki's monthly sales stand at 1.61 lakh units in May. Bajaj Auto's total two-wheeler sales rise 4%. पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी ने आज से अपनी ऋण दरों में 5 से 30 आधार अंकों की वृद्धि की। शेयर बाजारों में सेंसेक्स 185 अंकों की गिरावट में रहा और निफ्टी 62 अंकों के नुकसान पर बंद हुआ। हालांकि रुपया डॉलर के मुकाबले 12 पैसे की मजबूती में रहा और मारुति सुजुकी की मासिक बिक्री मई में 1,61,000 इकाई रही। बजाज ऑटो के 2 पहिया वाहनों की कुल बिक्री में 4% की वृद्धि हुई दर्ज। शुरुआत करते हैं बैंकों से जुड़ी न्यूज से। पंजाब नेशनल बैंक ने विभिन्न अवधियों के ऋणों के लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स पर आधारित अपनी ऋण दरों एमसीएलआर में 15 आधार अंकों यानी 0.15% की वृद्धि कर दी है। ये नई दरें आज से लागू हो जाएंगी। रिजर्व बैंक द्वारा मई में अपनी रेपो दर में 0.4% वृद्धि से उसे 4.4% कर देने के बाद पीएनबी ने अपने ऋण दरों में ये वृद्धि की है। इस संशोधन के बाद पीएनबी का 1 वर्ष का एमसीएलआर पहले के 7.25% से बढ़कर 7.4% हो गया है। And ICICI Bank has hiked its marginal cost of lending rate 30 basis points across all tenures. So the 1-month MCLR has been hiked to 7.30% effective today. The 30 basis point hike means that the 3-month MCLR is now 7.35%. और एचडीएफसी ने भी अपनी प्रमुख ऋण दर में 5 आधार अंकों की वृद्धि कर दी है, जिससे नए और मौजूदा ऋण धारकों के लिए ऋण की किश्त ईएमआई बढ़ जाएगी। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ श्री एके भट्टाचार्य। इस न्यूज पर एनालिसिस के लिए बहुत बहुत आपका स्वागत है मिस्टर भट्टाचार्य। नमस्कार। मिस्टर भट्टाचार्य, आज जो 3 बैंकों ने अपनी ऋण दरों में वृद्धि की है, आप बता सकते हैं कि जो आरबीआई ने वृद्धि की थी 0.4% की रेपो दर में, उससे ये इसका कैसे लिंक है हमारे फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर लिसनर्स, और इससे क्या असर पड़ेगा ईएमआई पे? देखिए, जो बैंकों ने जो दर की वृद्धि की है उसका सीधा ताल्लुक है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 4 मई में जो एक ऑफ साइकिल जो एक रेपो दर में 40 बेसिस पॉइंट्स की जो वृद्धि की गई थी उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसी के जो 40 बेसिस पॉइंट्स के बढ़ने के बाद ही बहुत सारे होम लोन कंपनी एचडीएफसी के मिलाकर उन्होंने 30 बेसिस पॉइंट्स का वृद्धि तभी कर दिया था और आज जो किया गया है वो 5 बेसिस पॉइंट्स का और भी कर दिया गया हाउसिंग लोन के ऊपर। और जो आईसीआईसीआई बैंक का है उन्होंने पहले नहीं किया था और आज उन्होंने 30 बेसिस पॉइंट्स का ऋण दर में वृद्धि कर दिया है। तो जो समझ सकते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था ने जो रेपो रेट में जो वृद्धि हुई है उसको काफी उन्होंने थोड़ा बहुत अपने आप में समेट लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया कॉस्ट को, क्योंकि 40 बेसिस पॉइंट्स की रेपो दर में वृद्धि हुई है
पर जो अभी तक का जो इंक्रीज हुआ है वो 35 बेसिस पॉइंट्स का ही अभी तक का हुआ है और 30 बेसिस पॉइंट्स का नॉर्मल लोन का। तो इसका मतलब बैंकिंग व्यवस्था में एक एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है जो मैं समझता हूं जिससे कि पूरी 40 बेसिस पॉइंट्स का ट्रांसमिशन अभी तक नहीं हुआ है, बाद में हो सकता है। तो जो ईएमआई में जो है, ईएमआई में ऑब्वियसली डिपेंड करेगा आपका कितना लोन है। अगर आपका 30 लाख का लोन है, 25 लाख का लोन है, 40 लाख का लोन है, अगर आपकी फिक्स्ड रेट लोन है या आपकी वेरिएबल रेट लोन है, अगर वेरिएबल रेट है तो नेचुरली आपके जो नए जो इंस्टॉलमेंट जो आएंगे उसमें थोड़ी बहुत वृद्धि होगी, पर जो 35 बेसिस पॉइंट्स या 30 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि एक पूरे लोन के उससे मंथली में ज्यादा नहीं होता है, पर जरूर कॉस्ट तो बढ़ ही जाता है। Mr. Bhattacharya, you had said that the banking system has absorbed it to a certain degree and they might then pass on the increase a little later. So do you think that somewhere, this is a good time to take the fixed loans at the fixed interest, and how would this affect and how long do you think they'll be able to absorb it? Well, to some extent, it's a bank-specific function. There are many banks. Let's say HDFC is a very strong housing lending company, housing loan provides, and they have been able to absorb at least 5 basis points extra cost within their system so far. So I would imagine that given the overall rate environment where the Reserve Bank of India governor has sent out clear hints that more rate hikes are in the offing and rates may be increased further, maybe in the June 8 monetary policy review when the rates will be announced, you will see a further hike in the rates. So if there is a further hike, so probably anticipating that rate increase cycle coming in, it would be not a bad idea for people who are interested in getting into loans to get themselves locked into the current interest rate scenario and take advantage in relation to the future rate hikes, a lower interest rate scenario. Mr. Bhattacharya, inflationary expectations को कम करने के लिए जो ये कदम उठाया गया है बैंकों द्वारा रेपो रेट के इंक्रीज के बाद, क्या हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि डिपॉजिट रेट्स को भी बढ़ाएंगे बैंक? आपने एकदम सही कहा है कि जो इसके साथ साथ जो है जैसे फिक्स्ड रेट्स होते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स होती हैं, जो सेविंग्स बैंक डिपॉजिट रेट्स होती हैं, उसमें थोड़ा बहुत इजाफा, थोड़ा बहुत वृद्धि होने की उम्मीद पूरी तरह हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं होता है तो मैं समझता हूं बैंकिंग व्यवस्था को जो नेट इंटरेस्ट इनकम जो होता है वो मार्जिन बहुत बढ़ जाएगा। तो हम ऑलमोस्ट ये आशा कर सकते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट जो है बैंकों में हम जब पैसे हम डिपॉजिट रखते हैं, डिपॉजिट रेट जो है वो थोड़ी बहुत इसी मात्रा में शायद बढ़ने की हम उम्मीद कर सकते हैं। राइट, थैंक यू सर। और हमारे साथ जयंतो दास है स्टूडियो में। जयंतो, आपका भी हम रिएक्शन चाहेंगे। जो विभिन्न कमर्शियल बैंक्स ने ये कदम उठाया है आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के बाद, कैसे देखते हैं आप इस मूव को? कैसे ये अफेक्ट करेगा इन्फ्लेशन को या इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस को? देखिए, प्रधान रूप से ब्याज दर में करीबन 4 साल बाद ऐसा वृद्धि आया हुआ है और ये जायज है कि जहां पे रेपो रेट में एक वृद्धि आए तो साथ में जरूरी है कि बैंक्स को भी अपना दर, खास करके लेंडिंग रेट्स को पर इफेक्ट होना ही होना है। इसमें कोई मतलब, अब जैसे भट्टाचार्य साहब का सुना हमने, सिर्फ ये नहीं, शायद ये पहला वाला है, इसमें आगे आने वाले 8-9 महीने में 2-3 और इस तरह का रेट हाइक्स हम देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि डिपॉजिट रेट्स में ऑब्वियसली देयर विल बी एन इंक्रीज, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये समझते हैं कि लेंडिंग रेट्स का जो असर है वो हमारा आज का तारीख में जो आम श्रोता है उनको पर वो क्या असर हो सकता है। खास करके ज्यादातर हम जो निवेशक होता है या ज्यादातर हमारा श्रोता जो है अपना होम लोन्स की वजह से कहीं ना कहीं वो लोग जुड़े हुए रेट इंटरेस्ट चेंजेस में, तो उसमें बेशक आपका कॉस्ट बढ़ेंगे उसमें, और ये प्रधान रूप से इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए बहुत जरूरी है ये कीमत चुकाना। एक दूसरी बात ये रहा कि 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन का जो एक
बीच में एक उछाल आया हुआ था और उसमें शायद ये हमें देखना पड़ेगा अगले 3, 4, 5 महीने का अंतर, जब आप 2 पैसा या 4 पैसा वाहन में वृद्धि किस तरह का असर हो रहा है वहां पे, उनका जो ब्याज दर में है लेंडिंग रेट्स में अगर इंक्रीज होता है तो। तीसरा, सीनियर सिटीजन के लिए खासकर अगर डिपॉजिट रेट में इंक्रीज होता है तो उनका एक कहीं न कहीं सीधा सुविधा होता है, हालांकि मात्रा बहुत सीमित रहेगा यहाँ पे 40-50 बेसिस पॉइंट तक, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली अगर आपका लेंडिंग रेट्स में वृद्धि होता है तो डिपॉजिट रेट में भी होगा। लेकिन इस वक्त डिपॉजिट रेट में वृद्धि होगा एक पॉजिटिव फीचर ना बता के, इसका रिएक्शनरी फीचर बता के अगर हम चले तो मानना है कि आने वाले 6, 8, 9 महीने का अंतर अगर मुद्रास्फीति में काबू नहीं आ पाता है तो ये जो अलग से जो पेन जो है लेंडिंग रेट्स राइज होने का, ये तो बेशक जारी रहेगा और साथ में इसमें वृद्धि भी हो सकता है। Jitendra, when we talk of the possibility of investment and saving, small deposit rates increasing, then there's also these government securities, which is an alternative, which is very safe, I think, except for the lock-in period, which is a little longer than fixed deposits. Do you think that government securities, which we're anyway not getting a great market, the RBI has also seen that it was not up to expectations, the number of people who went in for it. So do you think somewhere they'll further compete with those? There will be a chance, but as I said, finally, it's the runaway inflation which we're facing at this point of time. And I am sure the MPC has just started the initial kickbacks, because if we link it with what's been happening globally, and specifically bellwether decision making is done by the US Fed banks, which typically also gives a signal of what's going to come in the next 6 to 9 months. So they have more or less, and analysts also have said there will be at least 5 to 6 rate hikes in this particular calendar year itself. So if that happens, and obviously in India also we would, it's not because of the rate hikes in US we are having rate hikes here, but given the inflationary spiral, I believe at least 4 to 5 rate hikes would be, quite prevalent in India too. Right. So in that case, we wouldn't be knowing to what extent, commercial deposit rates of banks would go in, and to what extent they would be a competitive, factor when you're comparing it with government securities. So taking a cue from that, I do believe while rates would be moving up for people who are looking for higher deposit rates, they would be having, some opportunities in terms of, not only banks, but in addition to government securities, where to park their funds or reallocate their funds, if not park new funds. So that would be something which we need to work for. But overall, Gaurang, I do believe that the pain of inflation would be a much more severe factor to look forward to, because at the end of the day, even if your lending rates are increasing your deposit rates are increasing by 50 to 100 basis point, and you have a runner in inflation, so that doesn't augur much, because your most of the cost of borrowing also increases. And as I said, most of us are tied up with a car loan or a house loan or some loan or the other down the line. It pinches the pocket directly. Yeah, so that will obviously get affected. आपका ब्रीफ सा एक प्रतिक्रिया, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा है कि भारत बाकी देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा रेजिलिएंट है, कहीं ज्यादा जो अभी सिचुएशन है उसको हैंडल करने में सक्षम है, और उसमें जो उन्होंने काफी सारे पॉइंट्स बताए उसमें सबसे ऊपर था स्ट्रांग फाइनेंशियल सेक्टर। एंड हमने अभी देखा कि जो फिस्कल डेफिसिट के फिगर्स आए हैं वो भी जो टारगेट था उससे कम आए हैं। सो आपको लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के डायरेक्शन में भारत की स्थिति मजबूत है? देखिए, इस वक्त मैं मानता हूं कि ओवरऑल फाइनेंशियल फैक्टर्स के बारे में जो जिक्र किया गया है उसमें 2-3 चीजें अगर आप ध्यान से फोकस करें, एक तो है मैक्रो पैरामीटर्स, दूसरा है आपका कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज, और तीसरा है सरकार किस तरह का खर्चा करने का अगले 6, 8, 9 महीने उम्मीद कर रहे हैं। तो ये तीनों का साथ अगर डिमांड मार्केट में जारी रहता है, इन्फ्लेशन तो ऑब्वियसली एक काबू पाने का मतलब फैक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो मैं मानता हूं कि इस वक्त जो मोर और लेस जो मोटा मोटा आंकड़े जो है उस आंकड़े के दौरान काफी हद तक रेजिलियंसी मार्केट में इस वक्त इंडियन इकोनॉमी में बेशक है, लेकिन इन्फ्लेशन और ग्लोबल इन्फ्लेशन एक ऐसा फैक्टर है, खास करके कच्चे तेल का कीमत। हालांकि अभी इंडिया काफी हद तक रशिया के ऊपर निर्भर करके तेल का अपने जो भी मतलब इंपोर्ट करके उसको बैलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं, एंड इट्स बीइंग डन क्वाइट फेयरली वेल आल्सो, because at the end of the day you have to take care of your own interest rather than Ukraine interest at this point of time. So taking a cue from that, I do believe obviously the financial parameters, although you have a GST story, so the May GST figures I don't think are that much to be feeling happy about if you compare it with the April figures, but yes, the financial parameters overall
at this point of time are better. And the other good thing is, Sonu, the onset of monsoons. So that's giving a good cushion, positive cushion to overall of what our expectations are of how the economy will pan up from here. It's going to come in, I think, 2 or 3 days earlier than expected. And if we have a normal to and above normal monsoon to carry us on for the next, 8 to 12 weeks, I think that will be a really big cushion in terms of comfort. And they're saying it's going to be well distributed. Exactly, that's what I said. It's really going to be a big cushion of comfort at this point of time. तो ये सारे फैक्टर्स हमारे शेयर बाजारों पर भी असर डालते हैं. देखते हैं आज शेयर बाजार का कैसा प्रदर्शन रहा. शेयर बाजारों में बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% की मंदी से 185 अंक टूटकर 55,381 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.4% की गिरावट से 62 अंक कम होकर 16,523 पर बंद हुआ. व्यापक बाजार की बात करें तो यहां प्रदर्शन बेहतर था. बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.1% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.6% की बढ़त दर्ज हुई. At the stock markets, the Sensex at the Bombay Stock Exchange fell 185 points or 0.3% to end at 55,381 today. The Nifty at the National Stock Exchange slipped 62 points or 0.4% to 16,523. But the broader market outperformed the Sensex, with the BSE Mid-Cap Index falling 0.1%, but the Small Cap Index rising 0.6%. Among sectoral indices on the BSE, the Power Index lost 1.7%. The Utilities Index declined 1.5%. The Realty, Healthcare and Technical indices dropped 1.2% each, and the IT Index fell 1%. The FMCG Index shed 0.7%, and the Telecom and Oil and Gas Index each ended 0.6% lower. Among the advancing indices, the Capital Goods Index climbed 0.8%, the Industrial Index rose 0.7%, the Metal Index gained 0.5%, the BankX moved up 0.4%, and the Finance Index inched up 0.3%. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे की मजबूती दर्ज करता हुआ 77 रुपए 52 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ. हालांकि आज हमने गिरावट देखी है सेंसेक्स में, लेकिन अगर हम देखें तो ब्रॉडर मार्केट में तेजी थी और कल से पहले पिछले 3 दिनों में 4% की बढ़त हुई थी. आपको लगता है कि बाजार बॉटम आउट हो गया है? और अब नहीं, वो कहना मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि मैं 2 चीज इस वक्त ध्यान देना की कोशिश करूंगा. वो ये है कि विदेशी बाजार अगर आप देखें, वोलेटिलिटी काफी तेजी में है. हालांकि आज यूरोप और एशियन मार्केट्स में थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी था, लेकिन एक इनहेरेंट वोलेटिलिटी मार्केट में काफी अभी भी है. और बॉटम आउट का बात अब तब करेंगे जब एक मोरलेस लंबा दौर अगर 2-3 हफ्ता तक एक पर्टिकुलर लेवल में मार्केट जो है उसका आसपास रहे. तो एक तो ये, दूसरी बात ये रहा कि आज भी काफी सारे चर्चा हो रहा है, शायद रशिया ओपेक में रहेंगे कि नहीं, उस बारे में भी एक चर्चा हो रहा है. तो ये सारी चीजें भी मार्केट को अलग से असर नजर आएंगे. और यहां से जैसे मैंने कहा, अगर जून में फिर से एक और राउंड ऑफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज आते हैं तो उसमें भी मार्केट के ऊपर एक अलग से निर्णय आशा हमें देखना है कि मार्केट किस तरह से उस रेट इंक्रीज को रिएक्ट करते हैं. तो बॉटम आउट का स्थिति इस वक्त मैं कहूंगा कि थोड़ा बहुत अर्ली स्टेज है, ये कहना बहुत मुश्किल है. लेकिन ये जरूर है कि अगर आप ट्रेंड्स देखें और ट्रेंड्स का साथ साथ बिटवीन 52 और 54,000 सस्टेन लेवल अगर सेंसेक्स में इस वक्त होते हैं, हालांकि 55,000 के आसपास आज का तारीख में है, तो अगर जून में भी मैं मानता हूं 52 और 54,000 और साथ में कोई जियोपॉलिटिकली या ग्लोबली कुछ अलग से फैक्टर्स ना क्रिएट होता है जहां पे नेगेटिव इंपैक्ट हो, तो एक बहुत अच्छा स्थिति बनेगा जहां पे मार्केट को यहां से बिल्डअप करके आगे फिर से दौड़ना शुरू करे. तो वो एक फैक्टर हम बेशक उम्मीद करते हैं. राइट. Joined drawing your attention to the metal index. The metal index has seen a 16% fall in May, which is the sharpest fall since March 2020, and the government's decision to put a tax on an export duty on exports. And how will that affect the domestic market? Because a lot of steel manufacturers within India, they do export. World demand is high, and I think internal demand, because a lot of infrastructure is coming up in the country, would also be high. So how do you think this will pan out, and how long will that, in your idea, the export, the tax which is put an export tax, will the government keep it? Well, typically export tax comes in when the government doesn't want to, local producers to go and sell it in the international market, because given the huge infrastructure
program which the government has, both themselves led by the government as well as the private sector. I don't want to, figure out the government in any way wants any sort of sluggishness happening because of non-availability of steel to, dampen this particular growth. Also wanted to probably cool prices a little. That's one part, obviously. The other part is, as I said, they would not like to, in the next, say, 12 to 18 months, because government is almost on the 7th gear. 5th gear is also, I think, understatement at this point of time when it compares to infrastructure building, specifically in the post-COVID era. So, taking a cue from there, obviously, the government would like to tone down, as you said rightly, not only the prices, but also ensure there is adequate amount of, metals, steel in that specific case to support this particular growth, iron and steel and things like that. So, that's an important factor. The other factor is China has just started opening up once again in terms of production post-COVID. Specifically, cities like Shanghai and all are just limping back to a state of normalcy. In fact, normalcy at least limping back to from what it was in terms of lockdown. For over the last almost 2 months, 2.5 months. So there is a strong belief that oil prices would increase further because China would have a renewed demand. Although the Chinese government is importing a lot of oil straight away from Russia. So taking a cue from there, I don't think government would like to appreciate the fact that domestic steel producers go and sell their product in the international markets at this point of time with a glut facing in a domestic demand. So that's another factor which I guess has been playing on, obviously. So this is something which was obviously expected. That's how governments obviously come in and they would like to work on that. Right. जंतु अगर हम जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं चाहे वो पिछले वित्त वर्ष की जीडीपी ग्रोथ को लेकर हो या पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग मई के लिए अप्रैल मई के लिए 54.6 54.7 कोर सेक्टर ग्रोथ 8.4% हो गई है अप्रैल में क्रेडिट ग्रोथ 11.3% अप्रैल में सो ये सब देखते हुए आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी या मीडियम टर्म ग्रोथ स्टोरी भारत की कैसी लगती है एंड मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूं कि अभी वैल्यूएशंस अगर अट्रैक्टिव है बाजार में तो आपको लगता है कि क्या इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा समय है स्टॉक्स एंटर करने के लिए या अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए? देखिए सोनू, आई हैव ऑलवेज सेड इन दिस प्रोग्राम, पर्सनली माय व्यू पॉइंट हैज बीन market at any levels is obviously a good starting point for any investor in terms of not only bringing in new investments but also reallocating their existing investments. So be it at 63,000 levels or be it 50,000 levels. What we need to understand are two things as an investor. You can't outplay the market every single day. It's very difficult because then, we would have been wizards and then everyone would have made money. No one would have lost money. So what we need to do is we have to average out our returns over a period of 3 years, 5 years. If you're a young investor, you will have a 10-year period in mind. If you're someone in the age bracket of 50 above, you'll have a 2-year or 3-year investment in mind because you'll have commitments in terms of expenses like a daughter's marriage or a son's marriage or a son's or daughter's higher education and things like that. So you have all your milestones which are much more nearer to be completed. So your investment periods are lessened in that sense. So taking a cue from there, obviously I believe at this point of time, there would be a chance where you can find some value stocks which you missed out, say, last year in terms of, what you believed could have been a right level to enter. And you can reallocate your portfolios. But uniform, I believe a uniform theory for the market is at all levels you can either enter or exit depending on what your portfolio and your appetite for the investment market is. It's just not possible to... So long-term steady investment is yours. बिल्कुल. Absolutely. Okay. ऑटो सेक्टर से हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं उन पर नजर डाल के इस सेक्टर पर भी आपसे डिस्कशन करना चाहेंगे. Absolutely. In fact, the country's largest car manufacturer, Maruti Suzuki India Limited, today announced that it had sold 1.61 lakh cars in May 2022. The total sales in May include domestic sales of 1.28 lakh units, and it's the highest ever monthly exports of 27,191 units. In fact, in a statement, Maruti Suzuki said a shortage of electronic components had a minor impact on the production of vehicles, mainly domestic models. Maruti said it has taken all possible measures to minimize the impact. The sales figures of May 2022 are not comparable to those of May 2021, obviously, as the operations of the company in May 2021 were significantly affected due to COVID-19 disruptions. And Tata Motors' total sales volume surged 185% to 76,210 vehicles from the 26,661 units it sold a year back. The company's domestic sales surged
204% year-on-year as it sold 74,755 vehicles in May 2022. टू व्हीलर्स से भी एक खबर है। पिछले महीने बजाज ऑटो के दो पहिया वाहनों की मासिक घरेलू बिक्री 59% के उछाल से 96,102 इकाई रही। इसी दौरान वार्षिक आधार पर दो पहिया वाहनों का निर्यात 15% की गिरावट दर्ज करते हुए 1,53,000 इकाई दर्ज हुआ। मई 2022 में बजाज ऑटो के दो पहिया वाहनों की कुल बिक्री ने पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 4% की वृद्धि दर्ज हुई। सो ऑटो सेक्टर की अभी आप क्या प्रोस्पेक्ट्स कहेंगे? बिकॉज कुछ समय पहले तक एक बहुत ही स्ट्रेस्ड सेक्टर था। आपको लगता है कि अब इम्प्रूव हो रहे हैं यहाँ पे? देखिए, ऑटो सेक्टर खास करके वाई ओनली फोर व्हीलर्स, इनफैक्ट टू व्हीलर्स ऑल्सो is expected to go through a major churn in terms of shift from your energy based fuel to EV sort of a sector. Now the EV revolution has set in India, so we have really promising new EV companies in the two wheeler sector, and we are also seeing how in the four wheeler sector EV as a segment is gradually getting promoted very fast. We had Delhi last year, which gave a window of registration free and all for EVs. We had West Bengal, which has now announced last week, or I guess early this week, of a 2-year moratorium on all your registration costs and all. So that's an important factor which has to be focused on also. आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। वॉल स्ट्रीट में गिरावट के बाद और इन आंकड़ों के आने के बाद जिनसे कारोबारियों को संकेत मिला कि मुद्रास्फीति में राहत के कोई संकेत नहीं है, एशियाई शेयर बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा। जापान का निक्केई 0.7% की बढ़त में रहा। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.6% की वृद्धि रही और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.4% की बढ़त में रहा। लेकिन चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.1% के नुकसान में और हांगकांग का हैंगसेंग 0.6% की गिरावट में रहे। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो अंतर दिवसीय कारोबार में लंदन का फुट्सी मामूली गिरावट पर था, लेकिन फ्रांस के कैक में 0.3% की बढ़त और जर्मनी के डैक्स में 0.4% की वृद्धि थी। On Wall Street, key indices ended lower yesterday as volatile oil markets kept soaring, inflation in focus, and investors reacted to hawkish comments from a Federal Reserve official. So the Dow Jones Industrial Average declined to 23 points or 0.7% to close at 32,990. The S&P fell 26 points or 0.6% to end at 4,132. And the Nasdaq Composite shed 50 points to 12,081. And a quick look at the oil prices. Global crude oil prices firmed today after European Union leaders agreed to a partial and phased ban on Russian oil and as China ended its COVID-19 lockdown in Shanghai. Brent crude for August delivery advanced $1.77 to trade at $117.31 a barrel. U.S. crude futures added $1.67 to $116.34 a barrel. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाले सोने का मूल्य 281 रुपए कम होकर 50,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया और जुलाई अनुबंध वाली चांदी का मूल्य भी 535 रुपए की गिरावट से 60,876 रुपए प्रति किलो के स्तर पर आ गया। आपसे जानना चाहेंगे, हमारे पास 50 सेकेंड्स है, ऑयल प्राइसेस अभी भी मेजर वो बने हुए हैं ऑब्स्टिकल? बिल्कुल, ग्लोबली एक मेजर ऑब्स्टिकल बना इन टर्म्स ऑफ वोलेटिलिटी और किस तरफ जाएंगे। वजह इसलिए क्योंकि नॉट ओनली जस्ट यूक्रेन वॉर बट ऑल्सो in terms of production factors as well as Russia's uncertainty which keeps on happening and is becoming worse because if Russia moves out from OPEC and all, that's another major shock which I guess the oil prices would like to bring into the higher prices. और अगर EU बैन लगाता है रशिया पे तो क्या आपको लगता है कि भारत को शायद ज्यादा एक्सपोर्ट्स मिले रशिया से? ये इस वक्त नॉट ओनली केस ऑफ एक्सपोर्ट्स बट आपका भारत का रिफाइनिंग कैपेसिटी वगैरह भी देखना है कितना हद तक भारत को चाहिए और किस स्तर पे चाहिए। बट मोर देन दैट आई बिलीव मोर देन इंडिया चाइना विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया Shanghai is opening up. So in that case, it's a strong belief that China will have a much more higher demand than what it is presently absorbing from Russia. बहुत बहुत धन्यवाद आपका जयंतो, आप आए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी। Thank you, Jayanta. Thank you so much. And now, before we close, a reminder of the headlines. Punjab National Bank, ICICI Bank and HDFC raised lending rates by 5 to 30 basis points from today. At the stock market, Sensex falls 185 points. Nifty loses 62 points, but the rupee appreciates 12 paise against the dollar. And Maruti Suzuki's monthly sales stand at 1.61 lakh units in May. Bajaj Auto's total two-wheeler sales rise 4%. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.